हरि ओम। नमस्कारः महोदय। सुप्रभातं गुरुवर्य। नमस्कारः महोदय। सुप्रभातं। सुप्रभातम्। आरम्भं कुर्मः। आदौ रघुराम महोदयः स्वभावकथनं करोति। अस्तु महोदय। ओम श्री परमात्मने नमः। नमः सर्वेभ्यः। गणितशास्त्रानुसारेण एकः समतल स्वरूप निर्माणार्थं कनिष्ठेन त्रीणि बिन्दूनाम् आवश्यम्। एकः बिन्दुः त्रीणि भागेन यदि विभजनं भवति चेत् एतानि त्रीणि बिन्दूनां विस्तारफलितमेव एकः समतल स्वरूपः अस्ति। गणितशास्त्रे चलनकलनशास्त्रम्, आंग्ले कैल्कुलस, अत्यंत प्रधान अंशमस्ति। भौतिकशास्त्रे च अन्येतर अभियंत्रणशास्त्रेषु तज्ज्ञानम् अत्यन्त अवश्यम्। सरल उदाहरणरूपेण यदि गोलस्य खण्डनं करोति चेत् वृत्तस्य आकारं वयं पश्यामः। तथैव घनाकार वस्तोः खण्डेन चतुरस्राकार समतलं वयं प्राप्तुं शक्यते। विलोमतः समतल स्वरूपस्य अनुकलेन घनं तथा वृत्तस्य अनुकलेन गोलं वयं प्राप्तुं शक्यते। तथैव मनुष्यः प्रथमे एकः एव, परन्तु प्रकृतिसम्बन्धित गुणेभ्यः सः बहूनि विकारान् प्राप्नोति। तद्वारा तानि सम्बन्धित बहूनि प्रापञ्चिक अनुबन्धनैः एकः मोहविश्वं रचयति। एतत् सर्वं कृत्वा तस्य स्वस्वरूपं प्रथमे केवलम् एकः, अर्थात् गणितशास्त्रे बिन्दुः इति भावं विस्मरति। भगवान् गुणविभाजनं सहित एतत् सर्वे विभाजनान् निजस्वरूप दर्शनार्थं सरलीकृत्वा तदवसर ज्ञानं बोधयति। विलोमतः अनुकलेन यदि एतत् अनंत समतलं यदि संलीयते अन्ते एकः बिन्दुः एव भवति। तदेव आत्मज्ञानम् अथवा मोक्षम्। भगवान् अस्मिन् अध्यायस्य प्रथम भागे तत् मोक्षमपि सन्यासं कर्तुम् उपदेशयति। अष्टादशोऽध्यायस्य एतस्मिन् भागे भगवान् मनुष्यस्य व्यक्तित्वान् प्रति रुचिरसमीक्षा प्रसादितवान्। मनुष्यस्य व्यक्तित्वं सत्वरजस्तमो गुणैः निस्सन्देहेन प्रभावति। चतुर्दशोऽध्याये भगवान् वदति, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गुणमयैः त्रिभिः येभिः भावैः इदं सर्वं जगत् मोहितम्। तैः विभ्रान्ताः इमे जनाः तान् गुणविकारान् अतीत्यं कर्तुं न शक्यते। अध्यायस्य नवदश श्लोकं प्रति 40 श्लोकपर्यन्तं ज्ञानं, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुखम् एतेषु विषयेषु त्रिगुणात्मिक अन्तराणि विशदीकरोति। अहं सुखम् इति विषये केवलं प्रथम द्वितीय अंशयोः मम अभिप्रायं निवेदितुम् इच्छामि। भगवान् 37 श्लोकं प्रति 39 श्लोकपर्यन्तं सुखविषये गुणप्रभावान् विशदीकरोति। यथा क्रियाणां कर्तृ कर्म करणानां च गुणभेदात् त्रिविधत्वात् तथा तत्फलस्य तत् त्रिविधत्वं संभवति, तच्च सुखं तादृशं भवति। यत्र समाधिवशात् अधिकं प्रीतिं प्राप्नोति दुःखस्य अवसानं च। 37 श्लोके भगवान् वदति, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिः प्रसादजम्। यत्तत् सुखम् अग्रे पूर्वं प्रथम सन्निपाते ज्ञानवैराग्य समाध्यारम्भे अत्यंत आयासपूर्वकत्वात् विषमिव दुःखात्मकं भवति। परिणामे ज्ञानवैराग्यादि परिपाकजं सुखम् अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं विद्बद्धिः। कश्चित् व्याधि यदि भवति चेत् प्रथमे औषधिना अनन्तरं सूच्यौषधिना कश्चित् समयेषु शल्यक्रियाया अपि चिकित्सा कर्तुं वयं पश्यामः। एतानि सर्वाणि क्रियाः प्रथमे दुःखतरम् अभवन्। तथैव
विद्यार्थये यावत् संवत्सरं नियमेन कठिनश्रमः प्रथमे बहु कष्टमस्ति, परन्तु अन्ते विजयम् अमृततुल्यमस्ति। मम स्वविषये 7 वर्षाणां श्रमाम् अन्ते विद्यावारिधि उपाधि प्रमाणपत्र प्राप्त समये अतिसुन्दरभावेन परिसमाप्तम् अभवन्। क्षीरसागर मथन संदर्भे एतत् श्लोकस्य विवरणं द्रष्टुं समग्रेण शक्यते। प्रथमे बहु कष्टेन क्षीरसागर मथनं, मेरुपर्वतस्य विस्रंशनं, तदनन्तरं हालाहलजननम्, एतानि सर्वाणि प्रति धैर्यं धारय सहनशीलतया एव अन्तिमे अमृतम् अर्थात् अनन्तसुखं प्राप्तुं शक्यते। सात्विकः सर्वावस्थायां सर्वे कष्टसुखान् भगवतः संयजते, अतः सः कष्टिदपि कृच्छ्रन् कर्मान् सहते, कृच्छ्रकर्मान् सहते। सर्वावस्थायाम् अस्माकं कष्टसुखान् भगवान् पर्यवेक्ष्यति इति भावेभ्यः सः कर्म करोति। अर्थात् मार्गमध्ये संभव संकटान् अधिगम्य सदा कार्योन्मुक्तः भवितुम् अवश्यम्। महर्षि भर्तृहरि वदति, प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः, उत्तमगुणा न परित्यजन्ति। विघ्नाः संभवन्ति इति भावेन अल्पजनाः पुण्यकार्यान् न प्रारभ्यन्ते। मध्यमाः किंचिदपि विघ्नेन कार्यमध्ये त्यजन्ति। केवलम् उत्तमजनाः अवरोधान् अधिगम्य सत्कार्यान् पूरयन्ति च कदापि न त्यजन्ते। As it said, 1% inspiration and 99% perspiration, but still it's worth 100%. भगवान् पूर्वे सप्तमोऽध्याये वदति, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः इति। सः सात्विककर्ता, तस्य कर्म सात्विककर्म च तत्सुखं सात्विक अर्थात् शाश्वत सुखम्। अनंतर श्लोके भगवान् राजसिक सुखं वर्णयित्वा विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् इति वदति। विषयेन्द्रिय संबन्धात् जातं यत् सुखं तत् अदौ अमृतसदृशम् अन्ते विषसदृशं च भवति, तत् सुखं राजसम् अभिहितम्। लोक इव विषयासु रञ्जसां दुःखगर्भमपि मन्यते सुखम्, अमिषं बिडिशगर्भमप्यहो मोहतो ग्रवति यद् अंडजः। मत्स्यकारः पलावस्य अग्रे स्थित चरां प्रति यथा मीनाः प्रलोभं प्राप्नुवन्ति तथा राजससुखाः सन्ति। एतानि सुखाः बाह्ये दृश्यसुखाः एव। तानि दृश्यसुखानां मध्ये स्थित दुःखेभ्यः प्रति मीनाः धावयन्ति, परन्तु तन्मध्ये स्थित अति भयंकर दुःखान् अर्थात् मृत्युं ते न जानन्ति। एकः मेषपुत्रस्य यजमानः तं स्नात्वा हरिद्रकुङ्कुमैः सह अलङ्करोति। सः मेषपुत्रः अति आनन्देन मातरं समीप्य, अहो मम भाग्यं, पश्य माता, यजमानस्य मां प्रति एतत् सम्मानम् इति आनन्देन वदति। चिन्ताग्रस्त माता वदति, हे मंदबुद्धे, किमर्थम् एतानि सर्वाणि सः करोति इति त्वं न चिन्तयति। त्वां शीघ्रे बलिं दातुमेव यजमानः एतानि सर्वाणि अलङ्करणानि अकरोत्। एतद् अंशं विषादमेव इति अश्रुपूर्णेन वदति। आन्ध्रदेशे सहित अन्येतर प्रदेशेषु अन्यमत प्रचारेषु राजसिक च तामसिक सुखाः एव द्रष्टुं शक्यते। कथं केवलं वञ्जनतेन कपटेन घन अथवा धन अथवा किंचिदपि उत्कोचस्य कारणतः
सामान्य जनान् उपहासास्पदं कुर्वन्ति इति विषयं खेदकरम्। विषयानन्तरं प्रति क्षम्यतां, परन्तु एतानि सर्वाणि सुखाः राजस च तामस सुखाः एव इति ज्ञातुम् अवश्यम् इति अहं मन्ये। अध्यायस्य एतद् भागस्य अन्ते 56 श्लोके भगवान् वदति, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् इति। नित्यनैमित्तिकानि सर्वाण्यपि कर्माणि कुर्वन् भगवन्तम् एव आश्रयं मन्यमानः क्रमेण भगवदनुग्रहेण एव भगवद् अनुग्रहादेव भगवतः शाश्वत परां पदवीं प्राप्नोति। तदेव भावं भक्तियोगे अपि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि इति भगवद्वाक्ये वयं द्रष्टुं शक्यते। ते सर्वाणि कर्माणि प्रतिनिषिद्धान्यपि सदा भगवन्तम् एव यदा आश्रयः चेत् भगवान् तद्भक्तिम् एव स्वीकृत्य परमपदं ददाति। आदिशंकरः शिवानन्दलहरी स्तोत्रे वदति, मार्गावर्तितपादुकाः पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते गण्डूषां मुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भावतंसायते इति। पादुकाभ्यां महादेवस्य उपचारान् गण्डूषजलेन दिव्याभिषेकम् उच्छिष्ट मांसकबलं तस्मिन् निवेद्यं शैलाटस्य जुगुप्सवानि क्रियाः परमात्मने प्रीतिकररूपेण समाहितवन्तः। तदेव निजभक्तिः। दुराचारसम्बन्धिनः अपि भगवन्तं प्राप्तुम् अर्हः इति भगवत्पाद आदिशंकरस्य स्तोत्रेण अहं विरमामि। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः महोदय। बहु उत्तमं रवि महोदय, बहु उत्तमं। बहु उत्तमम् उदाहरणमपि दृष्टान्तमपि सर्वस्य। बहु उत्तमं महोदय। बहु उत्तमं महोदय। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः महोदय। अग्रे ज्योति भगिनी। सर्वेभ्यः नमस्कारः महोदय। एकनिमिषम्। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। आङ्ग्लभाषा एव हिन्दी मेलयित्वा किञ्चित् प्रयत्नं करोमि महोदय। The Bhagavad Gita is the most enchanting and comprehensive dissertation on how an ordinary mortal can rise above petty personal preoccupations to become the extraordinary immortal spirit. It draws from the sublime truths of Upanishads and presents them as a practical technique of living. So let us see, when we say practical technique, let us come to the current situation or how corporates work or how the modern world works. If we may apply modern management way of conceptualizing success, we need to apply our thoughts into the following aspects. We have to have a vision statement, mission statement. We have to have a strong action plan, and we also have to be equipped with the resources that are required to implement action plan. So even if a single ingredient is missing from the aforesaid list, there will be a retardation in our growth process. In this context, the growth process involves the approach to get ourselves liberated, that is to attain mukti or to realize Satchidananda. So I'm trying to apply here the same for our task as well. So what is our vision? All of us have an inborn desire for peace and happiness, and that sums up to Ananda, and let that be our vision. Now let us go to the mission. To realize true Ananda, which is Shashvatam and Avyayam, but there are times in life that we experience so much inner conflict that peaceful existence just does not seem possible. Bhagavad Gita has provided mankind with the science of spirituality and a way of life by which the doctrine of karma,
the natural order of cause and effect can be transcended. The state of transcendence can be achieved not by any arbitrary interference with the laws of nature, but by breaking the chains of karma through cultivation of an attitude of detachment and an unshakable faith in the divine. Through such devotion, one discovers himself to be the unchanging self, which is beyond the bondage of the works. The law of cause and effect is impeccable, universal, and totally unbiased. Yet, it can be transcended by gaining knowledge of one's true nature when one realizes himself to be the imperishable soul. He attains that realm of reality which is beyond the burden of karma, and then he reaches the state of being which is beyond any sorrow, which means Sadananda. Sattva, Rajasika, Tamasika gunas in different combinations form the basis for the fourfold classification of human beings in a society into Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. The Lord gives a brief resume of 3 spiritual disciplines to reach Brahman, that is Karma Yoga, the path of action for the body, Bhakti Yoga, path of devotion for the mind, and Jnana Yoga, the path of knowledge for the intellect. Pursuing the path of action, a seeker drops his bulk of vasanas or the desires. His mind becomes purified, his intellect becomes sharp, he rises to the path of knowledge and acquires spiritual values. He develops commitment to God and thus enters the path of devotion. The 3 disciplines prepare the seeker for concentration, meditation upon the Supreme, through which he realizes Brahman. Thus, the mental temperament of a man determines what class he belongs to, or each class has been given a set of duties to perform in this world. If a man does a type of work for which he is not fit temperamentally, there will be a chaos. Each class of people mentioned here has to work with the spirit of dedication for their own evolution and sense of fulfillment. When each one works according to the vasanas in him and fully devotes himself to the prescribed duties, he develops within himself and attains gradually the state of perfection. It is not a question of identical opportunities, but equal opportunities for all men to rise to the highest station in social life. For men differ in their powers. The swabhavas are different. Each one should have opportunity of achieving his human fullness, the fruits of wisdom and virtue, according to his effort and condition. The Varna rules recognize that different men contribute to the general good in different ways. Society is a functional organization, and all functions which are essential for the health of the society are to be regarded as socially equal. Individuals of varying capacities are bound together in a living organic social system. The process is not an attempt to achieve uniformity, which is impossible, but an integrated variety. All men are not equal in their capacities, but all men are equally necessary for the society, and their contributions from their different stations are of equal value. So long as our work is done in accordance with our nature, we are righteous, and if we dedicate it to God, our work becomes a means of spiritual perfection. When the divine in the individual is completely manifested, he attains the eternal, imperishable status. The problem that human life sets us to discover our true self and life according to its truth. Otherwise, we would sin against our nature. The emphasis on Swabhava indicates that human beings are to be treated as individuals and not as types. So having said this, now let us chalk out our plan of action. We saw our vision, we saw the mission, including how we have to operate in a society as per our swabhavas, and then we will see what is a plan of action. Now, the plan of action is very simple. We have to take up sadhana and become sadhakas, true sadhakas. So for this, we have to follow sadhana chatushtaya, the fourfold way of self-control, cleansing oneself, purifying oneself, making oneself fit for the entry of what
of that which is supremely divine. These four methods or the ways of practice are known as Viveka, Vairagya, Shat Sampati, and Mumukshatvam. Viveka is the capacity in us to distinguish between what is redundant in the world and that which is essential for making ourselves fit to tread through the path of truth, and that is called Viveka. Truth is to discriminate comes through Viveka. The process of rejection of what is necessary, what is unnecessary, what is redundant, what is meaningless, what is an interference is called Vairagya. We have seen all these things in detail through all these chapters, which Acharya has explained very well through a lot of practical examples. Now, Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Shraddha, and Samadhana are the 6 virtues, are the Shat Sampatti, the 6 treasures that we have to psychologically, emotionally, and feelingfully entertain in ourselves. If we are happy inside, for us to be happy inside. Through Viveka and Vairagya, we become clarified in our understanding. And through the Shat Sampati virtues, we become calm in the heart and mind. Now, the last one is Mumukshatvam. It is an intense desire or the longing for liberation, freedom, and self-realization. It is particularly important concept in Advaita Vedanta and Jnana Yoga, which both see as the essential requirement for, which I see as the essential requirement for finding moksha or liberation, which Bhagavan has emphasized as well. What are the resources then? We have seen the vision, mission, and action plan. Now we have to shift to resources. Now we are lucky, as I told you in the last, Bhavakathanam, that Vedas, Smritis, Puranas are the biggest source, and we are all lucky that we are born in this the country or Bharata Desham with Sanatana culture. The Vedas, Smritis, Puranas, Upanishads, Brahma Sutras, Bhagavad Gita, Bhagavan himself gives 12 sutras or 12 methods to attain moksha in chapter 4. Then there is Narada Bhakti Sutra, Sadhana Panchakam by Jagadguru Shankaracharya, Sadachara Smriti by Sri Madhvacharya, Dasa Bodha by Samartha Ramdasa, Shodasha Grantha by Vallabhacharya, and there are ample the resources, both written and in the folklore. There are so many regional spiritual preachers who have taught very simple teachings through their songs and stories. And more than anything, we have to observe ourselves and we have to do Swadhyaya. And Satsanga is one biggest source through which we can draw knowledge and inspiration. Above all, a guru who is the guide in our path to this journey. And we have all been blessed. I'm sure everybody in this group will agree that we have been blessed with an Acharya and a Guru in the form of Sri, I don't want to tell the name, our Guruji. Now, here 2 things are considered very important in our sadhana marga. Having said all these mission statements, action plans, resources, and all that, now we will go to see how we have to achieve, how we can work towards it. Now, 2 things are very important. One is buddhi and the other is dhriti. According to Swami Chinmayananda, dhriti signifies 3 qualities enriching one's character. They are fortitude, consistency of purpose, and actions. To quote Swamiji, it is that power within ourselves by which we consistently see the picture of a goal that we want to achieve while striving towards it. Dhriti discovers for us the necessary consistency of purpose. Dhriti paints the idea, maintains it constantly in our vision, makes us steadily strive towards it. And when obstacles come, Dhriti mobilizes secret powers within ourselves. Shall we say willpower? To face them all courageously, heroically, and steadily. Swamiji says that
There is no single word in English which captures all the above characteristics. So, for want of a better word, Swami Chinmayananda translates Dhriti into fortitude. It seems to me that the powerful word Dhriti carries with it the flavor of all four components: the vision, mission, action, and resource statement of success mentioned above. However, it has to be combined with other important characteristic, buddhi, which is nothing but a discriminating intellect. The discriminating power of intellect is instrumental in creating the right vision. Dhriti and buddhi have to go hand in hand to ensure that the vision is attained. In fact, Acharya Vinoba Bhaveji says that Dhriti and buddhi are two components of a machine. उन्होंने बताया कि दिशा दिखाने वाला है बुद्धि और गति बढ़ाने वाला है धृति. For a person confused and bewildered in the materialistic way of life, the body, mind, and senses which are engaged in sense gratification are the cause of bondage to repeated birth, death, old age, and disease. But the same ones, one who is advanced in spiritual knowledge, the same body, the same senses, and the mind are the cause of liberation. Let us see how Kathopanishad explains this. In Kathopanishad, Lord Yama advises Nachiketa, Atman ratim viddhi, shariram ratamevatu, buddhim tu saratim viddhi, mana pragrahamevacha, which means that he proposes a model where for working the principle through intellect, mind, body is described here. Know the spirit within as the sole passenger sitting in a chariot. The chariot is the body associated with the spirit. The intellect sits in the driver's seat and controls the horses harnessed to the chariot. Mind is the reins by which the charioteer gets hold of the horses to make them perform in accordance with its will. Indriyani hayanur hayana. I'm not able to pronounce. Hayanahu. Indriyani hayanahu. Hayanahu vishayaha steshu gocharan atmendriya manoyuktam bhoktetyahur manishinaha, which means the sense organs are horses. The objects in this universe keep pulling the sense organs towards them. The intelligent persons understand that the inner spirit is the true consummator of all objects. The spirit acts through the mind to reach the objects through the senses. Yastva vijnanavan bhavatya yuktena manasa sada tasendriya Mahodaya Shamyatam Yastva vijnanavan bhavatya yuktena manasa sada tasendriyanyava shyani दुष्टाश्व इव सारते. सम्यक् अस्ति वा महोदय? आमाम. एतत् कठोपनिषद से मैंने लिया है. तो I was trying to practice pronunciation, but बहु complex सन्धिपदानि अस्ति चेत् उच्चारणं त्रुटिः भवति. When one ignores this model, it disturbs the union of mind and inner spirit. Then the sense organs work without respecting any control. They run in all directions, dissipating the energy like a group of foul horses in the hands of an incompetent charioteer. The charioteer has no control over the horses, and eventually they topple the chariot. No meaningful progress is possible in such a scenario. Aham Samskrita shlokam skip kritva Angla Tatparyameva vadami Mahodaya. There are several shlokas, 5-6 shlokas in Kathopanishad, which compares this body to chariot, spirit as the traveler, horses and the reins as the control. So I'm just skipping pronouncing these shlokas because I'm scared I will make mistakes while pronouncing. For one who acknowledges this model of chariot, the mind is united with the inner spirit. His sense organs remain perfectly under the control like good horses in the hands of a competent charioteer. By ignoring this model, the mind gets scattered and turbulent,
it becomes incapable of conceiving higher realities. He is trapped in the ocean of worldly transactions. He cannot attain that state where one is free from cycles of birth and death. When this model is acknowledged, his mind remains organized and clear. He acquires the power to reach the state where one is free from the cycle of birth and death. One who keeps wisdom as the charioteer and uses the mind to rein the sense organs attains the strength to traverse the course of meaningful life. He reaches the state of Vishnu, which transcends in all states, fills the universe with his perennial presence. It says, Vijnana Saratis Priyastu Manaha Pragraha Vannaraha Sodvanaha Paramapnoti Tadvishnoho Paramam Padam. Which means we will be able to, by following this model of chariot, the horses, the sense organs and all that, whatever I spoke earlier, we will be able to transcend all these states and we will be able to reach the Paramam Padam. Na virato duscharitanch shanto nasa mahitaha. Samyak asti va Mahodaya. Na virato duscharitan nashanto nasa mahitaha nashantam anaso vapi prajnane naina mapnuyat. Sorry. None who has not turned away from bad conducts, whose senses are not under control, whose mind is not collected, whose mind is not at rest, can attain this Atman by knowledge. So the first and foremost requirement is that we should turn away from bad conducts whose senses are to be controlled and the mind has to be collected and mind has to not always be at rest to attain the Atman. So when 5 organs of perception become still together with the mind and the intellect ceases to be active, that is called the highest state. This firm holding back of senses is what is called yoga. Tam yogamiti manyante stiramindriya dharanam apramattastada bhavati yogo hi prabhavyayo. Tam yogamiti manyante stiramindriya dharanam apramattastada bhavati yogo hi prabhavyayo. This firm holding back of senses is what is known as yoga. Then one should become watchful. For yoga comes and goes, which is not permanent. Once we attain some steady state of mind, we should not think that we have attained the desirable state of mind, but the mind, this state or this sthiti can change anytime. It is not permanent, for which the yoga comes and goes. This is what this shloka says. So what should we do? Satu dirgha kalai nirantaras. Satu dirgha kalai. कितना प्रैक्टिस किया फिर भी mindful नहीं. सतु दीर्घ काल नैरंतर्यस्यत्कार सेवितो दृढ़ भूमिः, which means this is from Patanjali's Yoga Sutra, 14th verse. It says, उस अभ्यास को लंबे समय तक निरंतरम लगातार आधार पूर्वक श्रद्धा से दीर्घ काल पालन करने से वो मजबूती स्थिति वाला बन जाता है. Which means because this yoga is coming and going, it just flickers and goes off. For it to become permanent and we have to attain a steady state in that situation, we have to have दीर्घ काल अभ्यासा निरंतरम, always सत्कारा आधार पूर्वक से और सेवन के लिए जाने पर दृढ़ मजबूत भूमि को हम प्राप्त कर सकते हैं. Which means practice and practice and practice. That is the Patanjali's suggestion or
guidance for us. So all these things, as I told you, in folklore or our own spiritual gurus from different regions of our great nation, I would like to state something from Ramcharitmanas that our Saint Tulsi Das ji has written. Sunoho saka kaha kripanidhan jo hi jay hoi so syandana ana. Vibhishan has some doubts in his mind. So भगवान राम जी कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा है. So they are in the battlefield. So he says, this is not the ratha. जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है. सोरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समत रजो जोरे. शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए है, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है. बल विवेक दम इंद्रियों की वश में जो होता है, और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं. इस भजन सारथी सुजान बिरति चर्म संतोष कृपाना दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन कोदंडा. ईश्वर के भजन उस रथ के चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य डाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है. अमल अचल मन त्रोन समान, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा. निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है. शम मन के वश में होना, अहिंसादि यानी यम और शौचादि नियम से बहुत से बाण हैं. ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है. सका धर्ममय असरत झाके, जितना कहना कतहु रिपुताके. हे सके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जितने को कहीं शत्रु ही नहीं होते हैं, नहीं है. इसके अंग्रेजी में मैं फटाफट थोड़ा पढ़ा के सुनाती हूँ. The chariot which leads one to victory is quite another. Valor and fortitude are the wheels of that chariot. Truthfulness and good conduct are its banners. Strength, discretion, self-control, and benevolence are the horses that are tied to the reins of forgiveness, helpfulness, evenness of mind. Adoration of God is the expert charioteer. Dispassion is the shield and contentment the sword. Clarity is the axe, reason and the fierce spear, and the highest wisdom is the relentless bow. A pure and steady mind is the quiver. Quietude and various forms of subsistence and the religious compliances are the sheaf of arrows. Homage to the saints and to the one's own preceptor is an impenetrable armor. There is no alternate equipment for victory as efficacious as this. Dear friend, he who owns such a chariot of piety shall have no enemy to conquer anywhere. Listen, O friend of resolute mind. The hero who owns such a strong chariot can conquer even the mighty and invincible enemy. The enemy is the attachment to this world. Explanation above is deep. Strength and discretion without the ability to forgive and sympathize can be misused. Helpfulness without equality can get biased, and hence the choice of reins for specific horses by Tulsidas ji. Why intellect in Kathopanishad charioteer, prayer is the driver in Tulsidas chariot. Detachment is the armor that protects one from all injuries. We know this to be true from our daily experience. We are hurt as a friend, spouse,
or as an employee by losses or insults, and this since we are deeply attached to our identities. If we overcome this, we will be able to see everything in Samatvam. While the reference is to be to the battlefield, the chariot, as explained, is the remedy to our daily battles in this world. Every soul would desire to own such a chariot, and in the form of human body, it is for us to provide it to the soul. That is why the Manushya Janma is very important, because we need a chariot to reach the moksha through whatever I have explained. So once we have got the Manava Shariram, then we have to make use of this chariot to attain our ultimate goal. In Viveka Chudamani also, Bhagavan Shankaracharya ji says, among things conducive to liberation, devotion holds the supreme place. The seeking after one's real nature is designated as devotion. This he says in Shloka 31. I am not reading it because I may make some mistake in reading this Shlokam. So how Sant Kabir explains this real nature in us? Jo til mahi tel mein, jo chakamak mein aag, tera sai तुझ ही में है, जाग सके तो जाग. तो ही से कबीर दास जी से कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है. अगर ढूंढ सके तो ढूंढ लो. माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मैल और सर धुने, लालच बुरी बलाय. Which means कबीर दास जी कहते हैं कि मक्की पहले गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख मुंह गुड़ में चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने के प्रयास करती है तो वो उड़ नहीं पाती है, तब उसे अफसोस होता है. ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है. दुर्लभ मानुष जन्म है, देहिन बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार. इसका भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है. यह शरीर बार बार नहीं मिलता है. जैसे पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता वापस पेड़ में नहीं लग सकता है. बंदे तो कर बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी ना बारंबार. इसका भावार्थ है, हे दास, तू सद्गुरु की सेवा कर, तब स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है. इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर फिर से बारंबार न मिलेगा. 5 दिन 5 गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत. इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, अपने ना ही कोई परोपकार किया, ना ही ईश्वर का ध्यान किया. अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत. इसलिए हम सब साधक ये निश्चय हमें करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब. कबीर दास जी कहते हैं कि जो आज कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है तो अब करो. जीवन बहुत छोटा होता है, अगर फल भर का समाप्त हो गया तो क्या करोगे. इसलिए वी हैव टू, व्हाटएवर वी हैव टू डू, टेक क्विक डिसीजंस एंड गेट इनटू एक्शन. अस्तु महोदय, ओम तत्सत. श्री कृष्णार्पणमस्तु. बहु उत्तमम ज्योति भगिनी, बहु उत्तमम. Last one was fantastic. Fantastic. महोदय क्षम्यताम, मैं इसको ऑलवेज आई बी इन फिक्स. पूरे 5 दिन में सिटी में रही थी. कल आके जो लिखा मैंने कोशिश की मैं पढ़ के उसको मनन करूं और अच्छी तरह से उसका उच्चारण करूं, लेकिन कर नहीं पाए. बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा था. कोई बात नहीं. अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा आपका, अच्छा किया, बहुत बढ़िया. धन्यवाद महोदय. अग्रे मंजुला भगिनी.
महोदय नमस्कारः। सर्वेभ्यः सुप्रभातं नमस्कारः। महोदय, हम बहुत क्षमा मांगते हैं। कल जो हम बताए थे, जो विचार हम बताए थे, ऐसे ही जो मन में जो उत्पन्न हुआ था विचार, तो वो हम बताए थे। दोपहर में जैसे हमको जो कनु भगिनी ने बताए थे वज्र सूचिका उपनिषद के बारे में थोड़ा सुनना है करके, उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा विचार करके उसका भी थोड़ा लिखेंगे करके मैं सोच के हम YouTube का हम वो सुनने के लिए चाहते थे, तो हमको वो नहीं मिला एंड में। शायद वो एडिट होके जो हम और भगिनी जो बताए थे, तो शायद वो एडिट हुआ है, लास्ट में मुझे वो नहीं मिल रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि शायद हम बहुत गलत बताए हैं, कि शायद हमने बहुत कुछ कुछ तो गलत बताए होंगे, तो इसीलिए शायद वो एडिट किया हुआ है। तो हमको तुरंत आपसे क्षमा मांगने का वो इच्छा हो रहा था। और हमेशा हमारे जिंदगी में जो ये जो हो रहा है, शायद वो नॉर्मल सबका जैसे होता है कि मुझे पता नहीं, बट मैं तो हर जो शब्द जो बताने, जो बात भी करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, या मेरे जो भी एक्शंस है, it is totally I put it in the lotus feet of my guru. So I was emotionally a bit overwhelmed, क्योंकि मेरे अनुसार ये जो भाव कथनम है, ये तो भाव की बात है, अंदर की बात है, और ये कोई मनुष्य की वो नहीं है। हम जब ये बात करते हैं सब, I don't know what is Bhagavad Gita to others, but for me Bhagavad Gita is हम जो ये जो सब यहाँ पे जो मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, इसके वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। तो आई डोंट नो, इस जन्म में जो मुझे ये जो शरीर भी मिला है, इस जन्म में मुझे गुरुजी के नाम गुरुजी मुझे जो मिले हैं, पता नहीं मुझे कितने जन्म के बाद मुझे मिले हैं, तो मुझे ये सदुपयोग करके मुझे बाहर निकलना ही है। तो मेरा सुबह से रात तक मेरे हर क्षण, मेरा सोच तो उसी में है। वैसे अभी तो इसीलिए मैं अपना काम भी छोड़ के, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं ये जन्म लिया हूँ, तो मुझे ये सब मौका इतना इट इज सो कंड्यूसिव, एक अच्छे फैमिली मिला है, और मुझे गुरुजी मिले हैं, और उनके आज्ञा जैसे, यानी कि मुझे मेरे सपने में आके आपको भगवत गीता पढ़ना है करके मुझे जो डायरेक्ट जो मैसेज मिला, और मैं आपके कक्षा में भी ज्वाइन कर लिया, तो मेरे लिए तो ये तो नॉर्मल कोई क्लास, ऑनलाइन क्लास अटेंड करके जाते हैं वैसे नहीं है मेरे लिए। मैं तो आई टेक इट वेरी इट इज, आई ट्राई टू चेंज, आई ट्राई टू इनकलकेट एवरी, जो आप शब्द एक एक शब्द भी बोलते हैं, वो मेरे लिए इट इज लाइक महावाक्य, यानी कि, और आई कांट एक्सप्रेस द हाउ मच आई फील ग्रेटफुल टू यू। मेरा ये जो धन्यवाद करके एक शब्द में वो पूरा पता नहीं मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी कि नहीं। तो इसीलिए मेरे लिए जो भगवान साक्षात, अगर जैसे हमारे अंदर जो भाव है भगवान, तो भगवान के स्वयं एक एक शब्द भगवत गीता में जो है, तो मेरा ये पर्सनल विचार है कि ये पूरा लोक में जो जो जीव राशि है, वो उनके सबके लिए है। बट खैर ह्यूमन बीइंग्स को हम थोड़ा सोच तो इंटेलिजेंट, दैट इंटेलिजेंस फैक्टर इज देयर, बात कर सकते हैं हम, तो थोड़ा शेयर कर सकते हैं, तो वी आर लिटिल हाईली इवॉल्व्ड। सो भगवान का करुणा, दया, इट इज डेफिनेटली वी कैन नॉट मेजर। तो ये जो दया करुणा अपने गुरुजी जो मेरे अंदर से मुझे जो गाइड कर रहे हैं,
तो मुझे लगा कि शायद हमने पहली बार, हमको ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत तो नहीं बोल दिया कि महोदया ने, शायद कुछ मुझे somehow मुझे ये जो बुक है नॉलेज का वो इट्स नॉट कमिंग डाउन, आई एम नॉट गेटिंग the thirst for knowledge or that thing. पता नहीं इतना सारा बुक्स पढ़ने के बाद भी वो तो मैं भगिनी एक उपनिषद के बारे में वज्र सूची का उपनिषद, तो हम सोचा थोड़ा उसके सुनते हैं करके, बट आई कुडंट हियर दैट अगेन। देन तब मुझे, हाँ तब तक मुझे ये महसूस भी नहीं हुआ था कि शायद हम कुछ बताए हैं गलत, बट बाद में तो हम तो थोड़ा सोचने लगे। देन तुरंत आपसे क्षमा मांगने का वो हो रहा था, तो इसीलिए हमने अभी आपसे क्षमा मांग रही हूँ। और इट इज डेफिनेटली नॉट टू, मेरा मन में कभी भी ये जो मैं करके जो है, मेरा माय अल्टीमेट एम इज ओनली टू मेक दिस पर्सन गेट डिसॉल्व्ड, और मे बी it's like I want to get I don't want to exist at all, because जब मैं करके मैं बाहर निकल जाती हूँ तभी तो परमात्मा का वो अंदर से, हम सबका तो प्रयास यही है शायद। तो यानी कि बट फॉर मी इट इज तो इसीलिए मैं वैसे भी आपसे कल परमिशन भी पूछा था कि कथामृत से ही मैं लिख के तो रात को 1:30 बजे तक लिख रही थी। देन मुझे लगा इसमें कोई अर्थ तो है ही नहीं कथामृत का, मैं एक वो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगी तो जब भी जो सभी जो हमारे एवरीबडी कैन लुक इनटू एंड दे कैन प्रोक्योर अ बुक। एंड मुझे वैसे भी ऐसा लग रहा था कि इतना इट इज लाइक हनी, the whole Katamrit, it's like honey. I don't want to be very dramatic or exaggerating, but it is the Satya. It is like मैं कौन सा हिस्सा में लेके मैं आपको, मैं जैसे मैं लिख रही हूँ बट ऐसा लग रहा है कि ये कमी है। तो मुझे, मैं अभी एक है मुझे पूरा कथामृत पढ़ के सुनना है, तो I mean that will be like wonderful if we all sit together and if we can, it is like, बट अभी जो समय का ये जो है आई हैव टू डेफिनेटली कंसिडर दैट। कथामृत ये जो बुक है मैं ग्रुप में डाल दूंगी, एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट अगर सबका है, इट इज इन अ ब्यूटिफुल सिंपल संस्कृत wherein everybody can read and enjoy. जैसे I don't have आपको पता है मुझे absolutely no knowledge, but still I'm able to read, understand. It is in a very simple language. So ये जो मैं लिखी हूँ तो that is okay. It is like only giving the honey from there to here. So it's like that. But today probably I was ऐसे ही अगर हम कुछ ऐसे बताएं पास्ट में या आगे फ्यूचर में भी बताएंगे, आपसे क्षमा मांग रही हूँ। और महोदया बट मैं एक चीज जो मैं सुबह में हम सोच रहे थे हम कुछ नहीं बताएंगे, हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं अगर कुछ अच्छी चीज नहीं बोल सकते हैं हम, इट्स बेटर टू बी साइलेंट रादर देन टेलिंग समथिंग विच इज रॉन्ग एंड विच इट शुड नॉट हर्ट अदर्स। तो इसीलिए तो हम सोच रहे थे हम कुछ नहीं बताएंगे, शायद मुझे मेरा बहुत अज्ञान है हमारे इसमें, तो इसको मेरा प्रयास ये है कि आई हैव टू वर्क मोर, यानी कि जस्ट नाउ आई हैव बिगन माय साधना, तो इसमें और अच्छे से वो होके, यानी कि ये जो बुक्स में ऑलरेडी है, उपनिषद में, ग्रंथ में जो जो ऑलरेडी है तो हम बताएंगे। आई मीन इट्स ऑल लाइक मुझे आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, क्षम्यता, बट मैं एक चीज मुझे आई कुडंट रेसिस्ट। मॉर्निंग जब मैं अपने ग्रंथों का मैं सोच रही थी मैं क्या हमको क्या करना है करके हम समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे सामने हमारा तिरुवासगम करके एक बुक मेरे हाथ में जैसे सामने ही था, जो पेज जो हमने खोला था मुझे वो मुझे लगा कि आई जस्ट शेयर दैट महोदया, आपकी अनुमति है तो मैं, ये तमिल में है, कैन आई रीड दैट इन तमिल महोदया? जी जी हाँ जी महोदय, धन्यवाद। तिरुवासगम ये हमारा माणिक्य वासगर करके
माणिक्य वासगर के बारे में बात करने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, तो पता नहीं मुझे वो योग्यता है कि नहीं, पर आई कंसिडर हिम नॉन इट ही लाइक maybe one day we have to definitely I will talk about him, स्वामी के बारे में। तो इसमें तिरुवासकम में एक जो है आई वुड लाइक टू रीड, உய்யா உன் உள்ளத்துள் ஓம்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாக்கா வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே வையாய் தனியாய் இயமானன் ஆம் விமலா பொய் ஆயின எல்லாம் பொய்கள் வந்து அருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்சுடரே. எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே, அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே. So इसमें है कि उया उन उल्लतुल, हम सबके अंदर जो ओमकार वैसे जो भगवान हमारे अंदर हृदय में है, ही इज द ओनली ट्रूथ. विमला यानी कि जो मल नहीं है, तो विमला ही इज अ प्योर विडैपाका, where even Vedas also fail to express him. जो हम इस श्रुति, सभी श्रुति जो अपौरुष है, स्मृति, पुराण, सब everything in this world, wherever we turn, we look around, which that cannot be expressed or which cannot be even, हम थोड़ा सा भी हम उसका थोड़ा जान भी लेंगे तो ज्ञान का प्राप्त कर लेंगे, तो वैसे ऐसे हम कैजुअली बात करना भी पता नहीं मुझे वेदंगल अय्या एन ओंगी, even where even Vedas cannot express completely who you are, who is residing in our hearts, the pure infinite divine consciousness, the truth. ஆழ்ந்த அகன்ற நுண்ணியனே, you are the most you are the fire which is burning, and you're so hot and you're the coolest also. And பொய் ஆயின எல்லாம் பொய்கள வந்த அருளி மைஞானம், the true knowledge is the true knowledge, மிளர்கின்ற மை சுடரே. சுடரே, he is the one, the divine light, who is, he appear, he is a divine light, you know. He is a sudar. Sudar is the agni, which is ejnanam illadin inbap perumane. He is a true ananda, he is a true bliss. Ajnanam tannai agalvikkum nallarive. You are the one who takes away the ignorance, where we are veiled in ignorance. हम जब शिव सिद्धांत में या everywhere it is there, it is 3 things where knowledge should come in, ignorance should go out, and what should stay is anubhavam, the experience. So we all are like knowledge, हमको मिल रहा है, knowledge पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन भी करते हैं, उपासना करते हैं, और हमारा जो चित्त शुद्धि कर्म योग के द्वारा और चित्त एकाग्रता के द्वारा हम उपासना करके हम हर दिन निधिध्यास भी करते हैं। ये सब करने के बाद भी ये नॉलेज, तो ये इंटेलिजेंस, ये जो उसी लेवल पे है, और इज इट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनुभवम, तो हम सबको पता है, बट पता है उसी लेवल पे है, पर यहाँ पे बोलते हैं ये अनुभव करके, स्वामी जी जो लिखे हैं,
तो मुझे लगा सत्य तो सत्य है लिटिल बिट तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस बट आई एम सो सॉरी। मुझे ये तो बहुत सुंदर लगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। बहुत क्षमा मांगती हूँ महोदया। मैं कुछ गलत बोल दिया तो ये तो मेरे मन के अंदर से आता है, ऐसे कुछ भी प्लान नहीं रहता है, बट मैं हमेशा यही मैं बिलीव करती हूँ, ये जो तुरंत जो मन के अंदर से आता है वो सत्य। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम प्लान करके, जो भी मैं हमेशा मेरे साथ यही इट इज बीन आई कल भी बैठ के भी लिख के भी क्या फायदा, पर मुझे लगा ये क्या हुआ कथामृत का मैं पूरा, यानी कि मैं लिख के मैं बस उनको पढ़ के सुनने के लिए मैं भाव कथन, तो ये तो भाव कथन तो है ही नहीं। हमारे मन का भाव को जो प्रकट करना है तो वही है ना। तो हमेशा मेरा जिंदगी में तो मैं तो ऐसे ही हूँ, जो सत्य बोलना है तो बोलना है, नहीं तो इट इज ओके। तो मैं कोशिश करूंगी कि कम बात करने के लिए, थोड़ा मुश्किल है। एनीवे, धन्यवाद महोदया। मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ एंड आई एम सो सॉरी एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद महोदया। Manjula Bhagini, don't worry. You have told your own insight to us. So it is quite good. आम भगिनी, क्या है कि हमारा पूरा जिंदगी में अभी भी ऐसे